Good evening, everybody. I welcome you all to the platform of StudyIQ. StudyIQ platform रे आपण मानकु स्वागत करूछि। आजिर यूट्यूब क्लास रे मु डिस्कशन करिबी लास्ट टाइम अर्थात 2022 मसीहा रे ओएस परीक्षा रे सोशियोलॉजी पेपर 1 रे पढ़िथिबा क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करिबी। ये वीडियो रे आमे पेपर 1 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। नेक्स्ट वीडियो जोटा करिबी सेथरे आमे डिस्कशन करिबा पेपर 2 लास्ट ईयर ओपीएससी लास्ट ईयर कहले 2022 ओपीएससी रो सेकंड पेपर करिबा। आज फर्स्ट पेपर डिस्कशन को आसंतु। फर्स्ट पेपर रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि इन व्हाट सेंस सोशियोलॉजी इज ए साइंस एक्सप्लेन। जे ए क्वेश्चन आंसर लिखिया पई आगे लिखिबे What is sociology? Sociology is the systematic study of society. Sociology is the scientific study of social institutions which can be explained in terms of social fact. एक कथा कहि चंदी दरखेम। तापरे आउ गोटे डेफिनेशन लिखि परिबे sociology is the interpretative study of social action. ये डेफिनेशन देइ चंदी मार्क्स वेबर। तापर से पचारची इज इन व्हाट सेंस सोशियोलॉजी इज ए साइंस। तेनो फास्ट अपन लिखिले व्हाट इज सोशियोलॉजी, तापर सेकंड पॉइंट लिखिबे व्हाट इज साइंस। तेन जेतले साइंस कथा लिखिबे सेतले लिखिबे साइंस इज द सिस्टमैटिक एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज as well as systematic application of method. So what is sociology over, what is science over? थर्ड पार्ट को आसंतु इन व्हाट सेंस सोशियोलॉजी इज ए साइंस। देखंतु ए क्वेश्चन लिखिला बळे आपण गोटे बैलेंस्ड अप्रोच आपण मानको लिखिया पई पड़िबो। यू हैव टू राइट द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी इज ए मैटर ऑफ डिबेट एमंग आवर सोशियोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज वन ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हेडेड बाय ऑगस्ट कॉम्ट, एमाइल दरखेम, who are of the opinion that yes, sociology is a science just like physics is a science, because they are of the opinion that almost all fundamental principles of physics like observation, experimentation, verification, generalization, replication, explanation in terms of cause and effect relationship, precision, prediction are applicable in case of analyzing society and the events of the society. On the other hand, arrow side taku likhibe, on the other hand, there is another group of sociologists headed by Max Weber who are of the opinion that sociology is a science, but it is not the science like physics. It is not a science like physics is, rather it is a social science. एवं से माने जो अप्रोच अडॉप्ट करचंती दैट इज इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, सब्जेक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द एक्टर और सब्जेक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शन। एटा एतिक लिखि देले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर गला। सेकंड क्वेश्चन के आसंतु। सेकंड क्वेश्चन अछि पेपर 1 रो एलाबोरेट द व्यू ऑफ दरखेम ऑन एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। जे दरखेम कर एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ रे जहा व्यू अछि सेटा लिखंतु। एटा से पचारची 10 मार्क रो क्वेश्चन, 15 मार्क रो क्वेश्चन। सेक्शन ए होची 15 मार्क, सेक्शन बी होची 20 मार्क। सेक्शन ए रो क्वेश्चन के लिखिया पई आपन को 250 वर्ड रे आंसर लिखिया पई पड़िबो। सेक्शन बी अर्थात 20 मार्क रो क्वेश्चन के लिखिया पई आपन को 300 वर्ड यूज करिया पई पड़िबो। तेणु आसतु से पचार दरखेम व्यू रिलीजन उपरे कौन लिखंतु। एठी आगे लिखिबे दरखेम स्टडीड द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। द नेम ऑफ द ट्राइब इज ओरुंटा ट्राइब एंड इट्स टोटेमिक प्रैक्टिस दैट इज इट्स रिलीजियस प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड टोटेमिज्म। सो दरखेम स्टडीड totemism of Orunta tribe of Australian Aboriginals, and in this context Durkheim says totemism has been erected on the clan system. Every totemic clan has every
clan in a tribe has a totemic object. The totemic object may be a bird, may be an animal, may be a piece of wood, may be a polished stone. But all the members of the clan, they regard the totemic object as sacred. That is not any personal god in Hinduism. Hindu मानकर जेमती personal god अछंती राम, हनुमान, शिव ठाकुर सब अछंती सेमती नुहे. Rather, this totemic god is an anonymous, impersonal, mysterious god. तापर लिखिबो दरखेम कौन करूचंती जे रिलीजन को स्टडी कला बेलू को से कहउचंती डेफिनेशन दउचंती रिलीजन रो कहउचंती रिलीजन इज ए सेट ऑफ religion is a unified system of beliefs and practices related to sacred things, that is to say things set apart and forbidden, which unite them into a single moral community called church or denomination, those who adhere to it. तापर लिखिबे दरखेम करो रिलीजन रे केते गुडे इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि. फॉर एग्जांपल रिलीजन इज ए सेट ऑफ बिलीफ. Religion is a set of practices. In every religion there is an institution. In every religion makes a clear-cut demarcation between sacred and profane. Sacred means linked with religion. Profane means linked with our everyday utilitarian activities. तापर लिखिबे religion brings a sense of unity among the followers. Religion brings the self-sacrifice spirit among the people. एटा लिखि पर देबे. लास्ट को लिखिबे दरखेम has adopted functional views in context of religion, and he says people, those who participate in religion, they are indirectly respecting the values of the society. So he says religion is the divinized form of society. And for Durkheim, religion has positive contribution. What is the positive contribution? Religion teaches moral or ethical values to the people. Therefore, Durkheim concludes religion brings unity among all the followers. तापर 3 नंबर क्वेश्चन के आसंतु. व्हाट इज हाइपोथेसिस? डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. पिला माने मु ऑलरेडी हाइपोथेसिस रा आंसर एठी लिखि छी. कोन हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस रे आमे दीटा वेरिएबल यूज करंती. गोटे होची डिपेंडेंट वेरिएबल, गोटे होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एवं हाइपोथेसिस रे दीटा वेरिएबल भितरे गोटे को रिलेशन थाए. एग्जांपल मु हाइपोथेसिस रो दोची जे कोन सेटा हाइपोथेसिस मु कहिबी people of lower income bracket give birth to more number of children. Means the fertility of the people depends upon their income. माने इनकम टा होची इंडिपेंडेंट कैटेगरी आउ फर्टिलिटी टा होची डिपेंड करूची इनकम ऊपर. दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तेनो जदि मो कहूची rich people give birth to less number of children and poor people give birth to more number of children, this is a hypothesis. Then hypothesis is a tentative assumption with respect to the research finding. Hypothesis टा गोटे tentative assumption. आमे रिसर्च रो एंड रे कोन पाइबा ताकु नै. आ कहिली हाइपोथेसिस रे दीटा वेरिएबल थाए. गोटे होची डिपेंडेंट वेरिएबल आ गोटे होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एवं ता भितरे गोटे को रिलेशन थाए. जेमिति मु कहिली पुअर पीपल गिव बर्थ टू मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. तेनो गोटे लोक बेसी पिला जन्म करिवो कि कम पिला जन्म करिवो सेटा डिपेंड करूची तार इकोनॉमिक पोजीशन ऊपर. तेनो इकोनॉमिक पोजीशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the possibility of giving birth to children, that is reproduction, is dependent variable. तापर सेकेंड पार्ट रे से कहि छी जे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन विषय लिखंतु. मेनली तीनटा इंपोर्टेंट रिसर्च डिजाइन अछि. फर्स्ट रिसर्च डिजाइन रो ना होची एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. एठे लिखि देछि, अपन देखि देबे अपन माने
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन 3 नंबर टा जो लिखी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कौन? साइंटिफिक थ्योरी रो डेवलपमेंट करा जाए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करिक जे कॉज एंड इफेक्ट माध्यम रे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की आमे डेवलप करंती। जेमिति मु कहिली गोटे लोकटे कम पिला जन्म दब कि बेसी पिला जन्म दब दैट डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम और इकोनॉमिक पोजीशन। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। बुझे दरखेम जो कले सुइसाइड डिपेंड्स अपॉन इंटीग्रेशन। जदि गोटे लोकर सोसाइटी संगे इंटीग्रेशन कमी जीव तार सुइसाइड करिवार पॉसिबिलिटी बढ़ी जीव। दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सेकेंड रिसर्च डिजाइन रो ना होची सेकेंड रिसर्च डिजाइन रो ना होची डेस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डेस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन में कौन हम एक्चुअली ये कंपैरिजन कंपेयर करा हबो कंपैरिजन करा हबो दीटा ग्रुप संगरे विथ रिस्पेक्ट टू सेम इवेंट। केमिति मु कहिबी जदि मु कंपेयर करी देखंतु जनरली बहुत गुडे लॉरी ड्राइवर ट्रक ड्राइवर से माने मद पियंती। मु कहिबी कंपेयर करी ट्रक ड्राइवर्स इन ओडिशा वर्सेस ट्रक ड्राइवर्स इन पंजाब कहार अल्कोहलिक हैबिट अधिका एटी कंपैरिजन कराला। ड्रिंकिंग इज ए कॉमन फेनोमेनन बट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कंपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिंकिंग। दैट इज कॉल्ड योर डेस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन ना होची एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी अर्थ गोटे नुआ इवेंट आसिला नुआ फेनोमेनन टे आसिला नुआ प्रॉब्लम टे सोसाइटी के आसिला जहा उपरे सफिशिएंट रिसर्च है नाही तेनो रिसर्च लिटरेचर ता उपरे अवेलेबल नोहे। वर्तमान जदि गोटे रिसर्चर तारी उपरे गोटे नुआ फेनोमेनन उपरे इवेंट उपरे रिसर्च करूची ताकू आमे कहिबा तार रिसर्च डिजाइन रो ना होची एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। पिला माने 4 वर्ष तले सारा पृथ्वी की कोरोना आसिला। कोरोना जेतेबेले आसिला लोकंकर लाइवलीहुड को केमिते अफेक्ट कला जेतेबेले रिसर्च ता उपरे करा हला। आगुर तो कोरोना आसी नथिला फर्स्ट टाइम आसिला तेनो से रिसर्च डिजाइन के आमे कहिबा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। दिस इज ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। ओके तुम 3 नंबर क्वेश्चन गला ऑलरेडी मु आंसर लिखि देछि। 4 नंबर क्वेश्चन के पळे आसो। 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन गिव 4 एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन आज ए डाटा कलेक्शन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन कहले आपण माने कौन बुझंती एवं 4टा एडवांटेज ऑब्जर्वेशन न कुहंतु बा लेखंतु। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज ए टूल ऑफ डाटा कलेक्शन और इज ए टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन मीन्स watching some event, watching some phenomenon with a purpose। गोटे स्पेसिफिक पर्पस रखिकी गोटे इवेंट बा फेनोमेनन को वाच करने को कहा जाए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत गुड़ाए एडवांटेज अच्छी मु लिखि देछि एठी। फर्स्ट कथा कहूँ से पचार 4टा मु लिखि देछि अधिका। से कहूँ ऑब्जर्वेशन मीन्स डायरेक्ट एंड रियल टाइम डाटा कलेक्शन। सोशियोलॉजिस्ट गला फील्ड की जहाँ को स्टडी करछि तांको ऑब्जर्व कला तेणु डायरेक्ट मिलगला ना ना डाटा एवं रियल टाइम डाटा माने जेतेबेले ऑब्जर्व करछि सेतिबेले ताको डाटा मिलुछि रियल टाइम डाटा ऑकरिंग एट द सेम टाइम। सेकंड हला एलिमिनेट रिस्पांस बायस। कारण देखंतु अलगा जो मेकानिज्म अछि धरंतु आपण क्वेश्चनर मेथड डाटा कलेक्ट करिवे निजे जीवेनी फील्ड की लोकों पाखु को क्वेश्चनरी पठे देबे आज के दिन रे ईमेल ले पठे दउचंती तेनो सेथरे होची कोन सी रेस्पोंडेंट जहाँ पाखु पठाला क्वेश्चन ताकू कहब रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट रो निजर बायस सब अछि किंतु एठी कोन होची आपण डायरेक्ट फील्ड की जाउचंती लोकों को ऑब्जर्व करचंती तेनो मेरिट हला जे एठी रेस्पॉन्स रो बायस जोटा अछि सेटा एठी रहिबो नाही। थर्ड पॉइंट इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कारण ऑब्जर्वेशन ता सब बड़े नेचुरल सेटिंग रे लोक माने जो परिवेश रे रहउचंती आपण सेही मानको ऑब्जर्व करचंती तेनु आपण नेचुरल कॉन्टेक्स्ट रे
से मानकु देखुचंती एवं तांको बिहेवियर को बुझी पारुचंती तेनो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एटा दब नेक्स्ट होची इट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग नॉन वर्बल बिहेवियर लोक कथा कहबार आवश्यकता नाही आपण इंटरव्यू करिवे लोक जदि कथा न कहबे आपण कोन किछि डाटा पाइबे किंतु आपण जदि ऑब्जर्वेशन करिवे आपण दूररु ठिया है कि भी लोक को देखि कि तांको से कथा न कहिले भी तांको बिहेवियर स्टडी करके आपण पाइ जिवे डाटा एटा होछि मेरिट चारिटा से पचारछि मु छटा लिखि देछि आउ कोन ना फिफ्थ एडवांटेज हला इट इज फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टेबल कारण जेहेतु रिसर्चरटा फील्ड रे अछि से तार इच्छा अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी रखी ऑब्जर्व करिया पाए लास्ट पॉइंट होची इट इज एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड ऑब्जर्वेशन सब लाइन रे हे परिबो एजुकेशन लाइन रे मार्केटिंग लाइन रे हेल्थ केयर लाइन रे एथनोग्राफिक स्टडीज रे सब उठरे हे परिबो सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन बर्तमान आसंतु 5 नंबर क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन कहूची डिस्कस the detail in details the relevance of pattern variable in social change पिला माने pattern variable concept किए देइथिले ना टालकट पर्सन्स देइथिले pattern variable कहले दीटा variability in the pattern of life one pattern of life is applicable to traditional society another pattern of life is applicable to modern society गोटे फार्मूला दे दोची सहज रे pattern variable को मने रखिया पई से फार्मूला टा होची कापाड CAPAD ए कापाडटा होची ट्रेडिशनल सोसाइटी लगी तार ऑपोजिट टा हो मॉडर्न सोसाइटी सी रहला कलेक्टिव ओरिएंटेशन तार एटा ट्रेडिशनल सोसाइटी रे कलेक्टिव ओरिएंटेशन रहिबो मॉडर्न सोसाइटी रे रहिबो सेल्फ ओरिएंटेशन कापाड रो ऑपोजिट टा होची मॉडर्न एटा ट्रेडिशनल टीएस अर्थ ट्रेडिशनल सोसाइटी तार ऑपोजिट टा आसीयो मॉडर्न सोसाइटी माने कलेक्टिव ओरिएंटेशन मॉडर्न सोसाइटी रे आसीयो सेल्फ ओरिएंटेशन अफेक्टिविटी एठी आसीयो मॉडर्न सोसाइटी रे अफेक्टिव न्यूट्रलिटी पी पर्टिकुलरिज्म एठी आसीयो यूनिवर्सलिज्म ए रे आसीयो अस्क्रिप्शन एठी आसीयो मॉडर्न सोसाइटी रे अचीवमेंट डी रे आसीयो डिफ्यूजनेस एसी आसीयो स्पेसिफिसिटी तेनो एटा होची पैटर्न वेरिएबल variability in the pattern of life in two different societies one is applicable to traditional society other is applicable to modern society से पचारछि आरो रेलेवेंस कोन सोशल चेंज रे अछि पिला माने ए जो पैटर्न वेरिएबल इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग सोशल चेंज कारण लेफ्ट साइड फीचर ट्रेडिशनल सोसाइटी रे अछि राइट साइड फीचर मॉडर्न सोसाइटी रे अछि सो pattern variable itself is reflecting the idea of social change how in the process of evolution a society is moving from tradition ridden society to modernity oriented society okay then एठी मु लिखि जेछि transition from traditional to modern society is depicted by pattern variable 6 नंबर क्वेश्चन के आसो in the role of family is the role of family as mode of social controls in the role of family as mode of social control still persist discuss the changing structure of family and marriage in modern times से पचारछि जे फैमिली रो सोशल कंट्रोल रोल आजिका दिन रे परसिस्ट करूछि कि तापर से पचारछि सेकंड पार्ट रे डिस्कस द चेंजिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एंड मैरिज इन मॉडर्न टाइम्स तम लिखिबो पिला माने इन ट्रेडिशनल सोसाइटी फैमिली वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल बट इन टुडेज सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडर्नाइजेशन स्टिल देन द सोशल कंट्रोल फंक्शन ऑफ फैमिली परसिस्ट but its degree of control has been reduced. In traditional time, it was the whole and sole agency of social control. It was controlling our life to the largest extent, but in modern times, its social control role has been substantially reduced. बुझियोछि कारण ट्रेडिशनल सोसाइटी रे जॉइंट फैमिली थिला जॉइंट फैमिली बहुत मेंबर मेनी generations of people were living together brothers after marriage they were also staying together तेणु फैमिली गोटे इंपोर्टेंट और डिसिसिव रोल थिला सोशल कंट्रोल ले आजिका दिन से जिनसटा नाही
এই কଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ତମେ ଲେଖିବ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସ जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली कथा कहउचंती भोजेल एंड बेल को कथा लिखिबो फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ फैमिली केमिति फैमिली ले चाइल्ड टा स्केपगोट हे जाईची स्केपगोटिंग हला जे बापा मां को भितर झगड़ा होची बिना कारण चाइल्ड गाड़ी सुनुची तन चाइल्ड इज ए स्केपगोट एक कथा भोजेल एंड बेल कहउचंती तने एगुडा लिखि पारिबो फैमिली लो एवं क्लियरली लिखिबो फैमिली लो सोशल कंट्रोल रोल मॉडर्न टाइम्स रे कमी जाईची लिखिला बेलको एक कथा टालकट पार्सन्स को कथा लिखिबो भोजेल बेल को कथा लिखिबो डेविड कूपर को कथा लिखिबो ता संगरे नेल जे स्मेल्सर को कथा लिखिबो जोसेफ के फॉल्सम को कथा लिखिबो जे कहउचंती इनवाइटिंग आवर ओल्ड पेरेंट्स टू लिव विथ अस इज रिगार्डेड एज ए वाइस टू बी टैक्टफुली अवॉइडेड than a virtue to be cheerfully performed. नेल जे स्मेल्सर का कथा लिखला बेलको लिखियो यूनिफंक्शनलाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ द फैमिली ओके अच्छा तापर सेकंड पार्ट रे से कहूची डिस्कस द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एंड मैरिज इन मॉडर्न टाइम्स लिखिबो हां फैमिली रो स्ट्रक्चर मैरिज रो स्ट्रक्चर रे बहुत चेंज हेची कोन न्यूक्लियर फैमिली टा बढ़ी चलची एक्सटेंडेड फैमिली ब्रेक करिक न्यूक्लियर फैमिली होची सेकेंड कथा होची कौन सिंगल पेरेंट्स आसुचंती ब्लेंडेड फैमिली आसुची ब्लेंडेड फैमिली कहले स्टेप फैमिलीज दी जण मैरिज करथले तांको मैरिज फेलुअर हला डिवोर्स करी गेले डिवोर्स परे पुणी माने अलगा पार्टनर को बाहा हेले एटी स्टेप फैमिली पळी आसला पूर्व पार्टनर पाखरु पिला थिला पुणी एबे जो मैरिज कले अलगा पिला हेले एटा ब्लेंडेड फैमिली हमें कहउचंती तापर कहउची कोन आजिका दिन रे मैरिज टा डिले होची अल्टरनेटिव लिविंग अरेंजमेंट आसुची ता संगे चेंज कौन आसी चेंज इन जेंडर रोल इन फैमिली गुड़ा सब आसुची टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन लगी आज कौन होची सरोगेसी आसीची सरो सिबलिंग आसुचंती ए सब जिंस लिखिबो अल्टरनेटिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आसीची एई बाटे सब फैमिली और मैरिज रे चेंज आसुची स्ट्रक्चर रे केमिति गोटे समय फैमिली टा पैट्रियार्कल थिला आजिका दिन रे इगैलिटेरियन पेरेंट फैमिली पळी आसलानी ता संगरे कोन होची आगरु फैमिली टा थिला पैट्रिलोकल आजिका दिन रे जो पुआ झियो उभय हस्बैंड वाइफ उभय चाकरी करचन त नियो लोकल पैटर्न ऑफ रेसिडेंस केमिति इमर्ज करची ए सब कथा लिखियो तापरे 7 नंबर को आस define the concept of ideal type given by Max Weber with suitable example पिला माने लिखिबो Max Weber कर ideal type is a creative confluence of Dilthus historicism Neoplatonism and Kantian metaphysics एठी लिखि दउची ideal type is a creative confluence of Dilthus historicism Neoplatonism and Kantian metaphysics ए तीनटा कॉन्सेप्ट को सिंथेसिस करिकी मैक्स वेबर कोन करचंती एटा मैक्स वेबर कर कॉन्सेप्ट सिंथेसाइज करिकी ए तीनटा कॉन्सेप्ट को मैक्स वेबर आइडियल टाइप डेवलप करचन तापर लिखिबो कोन डेफिनेशन लिखिबो ideal type is an analytical construct which serves the investigator as a measuring rod to ascertain similarities as well as deviation in concrete cases लिखिदबो तापर फीचर्स ऑफ आइडियल टाइप लिखिबो तापर लास्ट को लिखिबो टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप तीन प्रकार आइडियल टाइप ऊपर मैक्स वेबर कहचंती फर्स्ट हला आइडियल टाइप ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर सेकंड हला
ideal type of abstract element of social reality. Third one hela ideal type of rationalization of reconstruction of social behavior. गला ये तीनटा टाइप लास्ट को कंक्लूजन लिखि दबो by coining the concept ideal type Max Weber laid the foundation of interpretative approach in sociology, okay, for which subsequently but interpretative social science research methodology also developed in sociology. Okay, सतला सेटा तेनो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज ए कांसेप्ट हाउ डज इट रिलेट टू थ्योरी. पिला माने व्हाट इज कांसेप्ट तमे लिखिबो कांसेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन. Concept is an abstraction or concept is a fundamental idea having a meaning. Mu kahibi intelligence is a concept, student is a concept, man is a concept, woman is a concept, transgender is a concept. So concept is a fundamental idea or abstraction that represents a category or a phenomenon or even a process. Concept helps us in understanding the social reality by giving meaning. तेनो concept सबले गोटे meaning दिए. Concept is used in scientific study and scientific research. तापर से पचाउची how does it relate to theory. पिला माने concept को नहीं की कौन करा हुए ना आमे first करंती hypothesis करंती एवं hypothesis जेतबले टेस्टेड है कि प्रूव टू बी रेलिवेंट हुए सेतबले थ्योरी हुए. सो इन हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड एंड सब्सिक्वेंटली obviously hypotheses are tested and replication mechanism is adopted and finally they contribute for formulation of theory. एटा होची लिंकेज बिटवीन कॉन्सेप्ट आउ थ्योरी भितरे बुझे होची. मु कहली कॉन्सेप्ट हला इंटीग्रेशन, हाइपोथेसिस हला कौन सुइसाइड डिपेंड्स अपॉन इंटीग्रेशन. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सुइसाइड एंड इंटीग्रेशन. दरखेम हाइपोथेसिस यूज करले कॉन्सेप्ट को आगे धरले तापर हाइपोथेसिस हला एंड दरखेम्स हाइपोथेसिस वेयर वाज प्रूव्ड टू बी रेलिवेंट. Subsequently replication was made, generalization was made and now it became theory. This is the interconnection between concept and theory. Okay, 8 number question over. एटा लिखि देछि देखि दबो. आसो बर्तन 9 नंबर क्वेश्चन के आसो. डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू. से कोची क्वेश्चनर और इंटरव्यू भितर डिफरेंस कोन लेख. पिला माने ये दीटाक होची टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन करिवार टेक्निक ये दीटा तांका भितर डिफरेंस विभिन्न पॉइंट को नेकी मु एठी लिखि देछि. डेफिनेशन को नेकी डिफरेंस अछि. क्वेश्चनर ता कोन हबो क्वेश्चन फॉर्मेट रे क्वेश्चन गुडा को अरेंज करा हबो दैट इज क्वेश्चनर. इंटरव्यू माने फेस टू फेस इंटरैक्शन जहाँ संगरे तमे जहाँ पाखरु डाटा आनिया पई चाहू ता संगरे फेस टू फेस इंटरैक्शन करिवो. सेकंड हला मोड ऑफ डाटा कलेक्शन. क्वेश्चनर रे कोन हबो निजे रेस्पोंडेंट क्वेश्चनर रा आंसर लिखिबो. इंटरव्यू रे कोन हबो माने इंटरव्यूअर रिसर्चर फील्ड की जीवो लोक संगरे इंटरैक्शन करके डाटा आनिबो. फ्लेक्सिबिलिटी की नै की डिफरेंस अछि कोन देख. क्वेश्चनर रे रेस्पॉन्स आर यूजुअली फिक्स्ड. इंटरव्यू रे किंतु सेटा फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन को नै कि क्वेश्चनर और इंटरव्यू भीतर तफात अछि कारण क्वेश्चनर रे कोन हबो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हबनी. गोटे जनरल आंसर आमे पाइबा किंतु इंटरव्यू रे आमे डीप गोइंग अप्रोच अडॉप्ट करी परिबा. डीप की आमे जाई परिबा. टाइम और कॉस्ट को नै कि डिफरेंस अछि. क्वेश्चनर करिया पई क्वेश्चनर मेकानिज्म रे डाटा कलेक्शन करिया पे कम समय लगे कम खर्च हुए. इंटरव्यू
माध्यम डाटा कलेक्ट करने अधिका समय लगे बहु पैसा खर्च हुए। नेक्स्ट हूँ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। कौन हूँ देख क्वेश्चनर रे it is less prone to interviewers bias but may suffer from non response or misunderstood questions। माने एथरे इंटरव्यूअर रो विशेष रोल नाही, क्वेश्चन लेखिकी पठेई देला तेम ता बायस टा एठी कम रहिबो, किंतु एठी रेस्पॉन्स रेट कम। इंटरव्यू रे कोन हबो रेस्पॉन्स रेट अधिका आसीबो किंतु इंटरव्यूअर रो बायस भी रहिबो सेठी। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू। आस 8 नंबर गला, 9 नंबर भी गला, 10 नंबर पचाउची डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। पिला माने social stratification refers to a mechanism by which people of a society are divided into different groups and they are hierarchically arranged. That is called social stratification. Social stratification विभिन्न dimension अच्छी। One of the dimension of social stratification is gender। man or man भितर जो relationship, man रो position अधिकांश सोसाइटी ओपरे ट्रेडिशन रिडेन डेज रे थिला, ओ मैन रो पोजीशन ट्रेडिशनल सोसाइटी रे तळे थिला। दिस इज हायरार्किकल रिलेशनशिप। सो स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन इंडिया, स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम दैट इज क्लास सिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो this is the connection between social stratification and gender. Gender is a specific form of social stratification। आंसर मु ऑलरेडी लिखि देछि, तमे देखि दबो। जेंडर एज ए बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जेंडर को नै कि केमिति पावर स्ट्रक्चर रे इनइक्वालिटी देखा होछि, जेंडर को नै कि केमिति इंटरसेक्शनलिटी अछि, अर्थात लो कास्ट, लोअर इनकम, ब्लैक वुमेन एमानकर पोजीशन आउरी तळे, जनरली वुमेन रो पोजीशन तळे, किंतु से वुमेन ता जदी ब्लैक हेथिबो, ब्लैक रेस यूरोप रे बा इंडिया रे दलित वुमेन हेथिबो एवं पाठ पढ़ी नथिबो, तार इनकम नथिबो, ताहले सबठु तळे रहिबो। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शनलिटी। आज का दिन रे केमिति चेंज होछि, जेंडर इक्वालिटी केमिति आसुछि से कथा लिखिबो। बर्तन 11 नंबर क्वेश्चन की आसो, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट वुमेन? डिस्कस। ग्लोबलाइजेशन केमिति वुमेन मानकु सारा पृथ्वी रे अफेक्ट करूछि से विषय रे डिस्कशन कर। देख पिला माने इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आकु नै कि बहुत सोशियोलॉजिस्ट माने डिस्कशन करचंती। फॉर एग्जांपल एंथोनी गिडेंस कहउचंती, सिल्विया वाल्वी कहउचंती, बहुत सोशियोलॉजिस्ट ए विषय डिस्कशन करिचंती। इवन सतीश देशपांडे करूचंती, नीरा देसाई कहिचंती। तेनो सेमान कथा लिखिबो, तेनो लिखिबो ग्लोबलाइजेशन इज अ रिसेंट प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। आज इट इज अ रिसेंट प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, it has brought many positive consequences or contributions for women all over the world, and at the same time globalization has brought many unwanted challenges for women all over the world। तेनो पॉजिटिव एस्पेक्ट रे कोन हेची ग्लोबलाइजेशन लगी। देख आज का दिन रे गिग इकोनॉमी आसीची। गिग इकोनॉमी टा कोन करूची, जॉब रे फ्लेक्सिबिलिटी आनुची, वर्किंग आवर रे फ्लेक्सिबिलिटी आनुची, वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट यूज करूची, जहा फल रे कि वुमेन माने घरे बसिकी निजर टाइम रे विभिन्न प्लेटफॉर्म रे काम करि पारचंती, अर्निंग स्कोप बढ़ी जाइछि। ग्लोबलाइजेशन कोन करिछि, केते गुडे स्पेसिफिक जॉब सर्विस सेक्टर रे वुमेन रिलेटेड जॉब आनिछि, सर्विस इकोनॉमी एक्सपांड करूची, फल रे ग्लोबलाइजेशन लगी मोर जॉब क्रिएट होची वुमेन का लगी। ता संगे होची कोन ग्लोबलाइजेशन लगी फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म आसीची, जे सेक्सुअल हाउ टू स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, जोटा मी टू मूवमेंट कहउचंती। ता संगे वुमेन आ मैन भितर जेंडर पैरिटी ऊपर प्रायोरिटी दिया होची, रिप्रोडक्टिव राइट वुमेन लगी आनिची। एगुड़ा सब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इवन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आसीची, वुमेन माने एग्रीकल्चर रे निजुके एंगेज करूचंती। आउटसोर्सिंग होची, आउटसोर्सिंग माध्यम रे वुमेन मानकर जॉब स्कोप बढ़ी जाइची।
दिस इज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कौन होची पिला माने एडवांस टेक्नोलॉजी पृथ्वी के आसीची एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसयूज करिकी आमे कौन करचंती सेक्स ऑफ द फिटस इज डिटरमाइंड बाय द डॉक्टर्स एवं सेक्स सिलेक्टिव आबर्सन करूचंती फीमेल फिटस हेतले मारी दउचंती तन फीमेल फेटिसाइड बढ़ी इट इज अनरिपोर्टेड रिपोर्टेड में अनरिपोर्टेड ता संगरे कौन होची फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आसीला फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अर्थ वोमेन मानकर पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे बढ़िला काहे की बढ़िला कारण मेल माने छाड़ी की पड़े गले एग्रीकल्चर अलग राज्य को काम करिया पई अलग देश को काम करिया पई से माने अधिका पैसा रोजगार आशा रे एग्रीकल्चर को छाड़ी देले तमाने एग्रीकल्चर तांका लगी सेकंड रेटेड ऑक्युपेशन हे गला सो द वर्क which was rejected by male members that became the main source of livelihood for women एटा गोटे नेगेटिव व्यू दउची ता संगरे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी होची ग्लोबलाइजेशन पीरियड रे कोन होची ना तमर कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन होची इवन विभिन्न प्रकार ब्यूटी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज होची एगुडा सब एठी लिखि देछि पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ऊपर प्रायोरिटी आजिका दिन वोमेन ऊपर दिया होची पुणी एकड़े डिजिटल डिवाइड देखला को मैन जेतिकी परिमाण मैन भीतर टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी अच्छी वोमेन रे ताठू कम टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी अच्छी माइग्रेशन होची झिया माने भी जाउछनी बाहर को पाठ पढ़िया पे इंटरनेशनल माइग्रेशन होची पुणी इंटरनल माइग्रेशन रे कौन होची वोमेन वर्कर माने एक्सप्लॉइटेड होचंती एवडा लिखि देइछि देखि दब अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन के आसो 12 नंबर क्वेश्चन कोची व्हाट इज मैजिक डिस्कस इन डिटेल द सोशल फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन मैजिक कहिले तमे कोन बुझुछ आ रिलीजन द फंक्शन डिसफंक्शन विषय लेख पिला माने लिखिबो मैजिक इज ए tool of adaptation as discussed by B.K. Malinowski. B.K. Malinowski कहते magic is a tool of adaptation and it is the most primitive tool of adaptation for human being. जेतेबळे साइंस रो डेवलपमेंट हे नथला सेतेबळे लोक माने मैजिक करिकी नेचर रो फ्यूरी रु निजको दूरेई की रखुथले अनसर्टेनिटी जोठी थाए सेठी मैजिक करा जाए तेनो मैजिक हैज बीन इरेक्टेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम सेठी दी प्रकार मैजिक कथा कुहा होची ब्लैक मैजिक वर्सेस व्हाइट मैजिक ब्लैक मैजिक करा हुए अन्यर क्षति करिया पई व्हाइट मैजिक मैजिक करा जाए अन्यर निजर उपकार करिया पई बा अन्यर उपकार करिया पई तापरे फ्रेजर बोल कि जो सोशियोलॉजिस्ट जो जेम एंथ्रोपोलॉजिस्ट अछंती जेम्स फ्रेजर तांका ना होची जेम्स फ्रेजर से दी प्रकार लॉ मैजिक की नहीं की डेवलप करचंती गोटे होची वंस इन कांटेक्ट ऑलवेज इन कांटेक्ट फर्स्ट लॉ ताकू नहीं की हला कंटाजियस मैजिक तापरे सेकंड कहला लाइक प्रोड्यूसेस लाइक ताकू नहीं की जो लॉ करा हैची से लॉ रो ना होची से मैजिक रो ना होची लाइक प्रोड्यूसेस लाइक ताकू नहीं की हला तमर कोन माइमेटिक मैजिक तनो मैजिक गला मैजिक रो फाउंडेशन वाला बिलीफ सिस्टम तापरे कहूची डिस्कस इन डिटेल द सोशल फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन फंक्शनल व्यू ऑन रिलीजन दरखेम रिलीजन ऊपर कोन क्वेश्चन लिखिबो टालकट पर्सन्स कोन क्वेश्चन लिखिबो दैट इज फंक्शंस ऑफ रिलीजन डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन कहिले कार्ल मार्क्स कोन रिलीजन ऊपर कहचंती सेटा को लिखिबो 12 नंबर क्वेश्चन सरिला बर्तमान आसो सेक्शन बी रो प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को लिखिया पई पड़िबो 300 वर्ड रे 20 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन रो वेटेज फर्स्ट कहला मैरिज इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सल इन इंडिया से कोची मैरिज टा इंडिया रे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन तमे लिखिबो ट्रेडिशन रिटेन डेज रे इंडिया रे मैरिज टा यूनिवर्सल बोल की कंसीडर करा होतला कारण इंडिया रे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब धर्म रे कुहाइची सेलिब्रेसी की डिस्करेज करा हाइची हिंदू माने तो कहती अनमैरिड पीपल आर इनकम्प्लीट पीपल इस्लाम भी कहूची जे
you should have sexual relationship within your wedlock. विवाह बंधन भितर मैरिज जानिया दरकार सॉरी विवाह बंधन भितर सेक्सुअल रिलेशनशिप रहिया दरकार ख्रिस्टियानिटी रे भी सिमिलर व्यू अछि सेलिबेसी की कोनोसी रिलीजन एनकरेज करू नाही तापरे एठी लिखिछि केमिति मैरिज गोटे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन इंडिया रे कल्चरल और रिलीजियस इंपोर्टेंस मैरिज रो अछि सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन मैरिज को नै कि अछि मैरिज को नै कि सोसाइटी रे लीगल रिकॉग्निशन आसीछि तापरे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैरिज माध्यम रे आसुछि इमोशनल स्टेबिलिटी किंतु लिखिबो आज का दिन रे चेंज होउछि आज यूनिवर्सल बोली कि हमें कहि परिबा नाही आज दिन रे कारण वर्तमान कोन होउछि सिंगलहुड बढ़ुछि डिवोर्स बढ़ुछि सेपरेशन बढ़ुछि एलजीबीटीक्यू मैरिज आसुछि कारण आगुरु मैरिज कहिले इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स which gives them recognition to establish sexual union and reproduce children. Relationship between two persons of opposite sex. Then से समय marriage कहला को persons of two opposite sex they were getting binded with each other. किंतु आज का दिन रे LGBTQ आसिला same sex relationship आसिला अलगा कंट्रीज गुडा रे same sex marriage भी आसीची एमतिया चेंज हिच ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन के आस 14 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ एक्सप्लेन द क्रिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया इंडिया रे फैमिली स्ट्रक्चर को कौ फैक्टर गुड़ा अफेक्ट करछि फास्ट कथा होछि मॉडर्नाइजेशन सेकंड कांसेप्ट होछि फैक्टर होछि इंडस्ट्रियलाइजेशन थर्ड होछि अर्बनाइजेशन फोर्थ होछि ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट होछि चेंज इन द वैल्यू सिस्टम आगुर थिला कलेक्टिविज्म वर्तमान आसी गला इंडिविजुअलिज्म आगुर थिला अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन हेवेनली ओरिएंटेशन वर्तमान आसी गला दिस वर्ल्डली ओरिएंटेशन आगुर थिला स्पिरिचुअलिज्म एबे आसी गला मटेरियलिज्म ई सब कारण लागि कोन होछि ना फैमिली स्ट्रक्चर ता चेंज होछि 15 नंबर क्वेश्चन के आस कोछि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पिला माने by the phrase equality of educational opportunity we mean people children all over the world even people all over the world maybe children maybe adult all over the world they would be given helping hand by every state to have education up to certain classes that is called equality of educational opportunity discuss in detail the role of education as an instrument of social change with examples education role social change रे कौन रही एटा लिखला बेलू टालकट पार्सन्स को कथा लिखिबो टालकट पार्सन्स कहउचंती फैमिली रे हमर कंसीडरेशन टा पर्टिकुलरिज्म की बेस करके ही थाए किंतु एजुकेशन कौन करे हमको यूनिवर्सलिज्म सिखाए फैमिली रे सब डिसीजन गुड़ा इमोशन और पर्टिकुलरिज्म की नहीं की हुए किंतु ब्रॉडर सोसाइटी रे लार्जर सोसाइटी रे सब डिसीजन टाको आमे कोन न्यूट्रलिटी रे नियंती न्यूट्रलिटी के बेस करके नियंती एवं इमोशनली न्यूट्रल वे रे आमे डिसीजन नियंती अफेक्टिव न्यूट्रलिटी टाको हुए एक कथा लिखिबो केमिति एजुकेशन आनुची अफेक्टिव न्यूट्रल बिहेवियर टालकट पर्सन्स कहउचंती इवेन कार्ल मार्क्स कहिचंती जेतेबेले ट्रू एजुकेशन मिली जिवो सेतेबेले कोन हबो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस वर्कर का मनरु पळेइबो दे विल गेट मेंटली प्रिपेयर्ड टू द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन बिकॉज ऑफ व्हिच द प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन विल आल्सो बिकम सक्सेसफुल ए कथा लिखि देई पारिबो केमिति एजुकेशन टा कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स डॉगमेटिक थॉट को केमिति प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अर्थ प्रैक्टिकल आउ लिबरल थॉट रे कन्वर्ट करची एक कथा लिखि पारिबो तापर 16 नंबर क्वेश्चन की आस 16 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हाट इज जेंडर हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड पिला माने जेंडर कहिले हमें कोन बुझंती पिला माने जेंडर इज ए सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट ए पर्सन इज born an infant is born only with sex identity but while the infant grows by age in the process of socialization the infant comes to know about his or her gender role तापर से पचारछि
हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड पिला माने जेंडर रो कंस्ट्रक्शन लगी विभिन्न एजेंसी सोसाइटी रे काम करचंदी सबठो बड़ एजेंसी हला हमर फैमिली पेरेंट्स माने हमको सिखांती जेंडर रोल सेकंड होची स्कूल हमको सिखाए जेंडर रोल थर्ड होची मीडिया और पॉपुलर कल्चर हमको जेंडर रोल सिखाए नेक्स्ट होची रिलीजन हमको जेंडर रोल सिखाए नेक्स्ट हला वर्क प्लेस और इकोनॉमी रे भी हमें जेंडर रोल सिखंती नेक्स्ट होची लॉ और पॉलिटिक्स हमको जेंडर रोल सिखौची लास्ट होची पीयर्स पीयर्स मींस पीपल ऑफ सेम एज ग्रुप से माने भी हमको जेंडर रोल हमें तांका पाखरु सिखंती दिस इज ऑल अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर और हाउ जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड तापरे आस 17 नंबर क्वेश्चन डिस्कस द नोशन ऑफ एलिनेशन as elaborated by Karl Marx पिला माने लिखिबो Karl Marx has discussed about alienation in context of his theory of class and class struggle. Karl Marx is of the opinion that alienation comes to the mind of an industrial worker in a situation when the dead labor कहले capital dominates over living labor कहले laborer बा worker तापर लिखिबो लिटरली alienation means separation from चारिटा एस्पेक्ट ऑफ alienation कथा कार्ल मार्क्स कहिसंती alienation from product alienation from process alienation from self and last one is alienation from community of co-workers as a last question की what is social mobility 18 number question paper 1 এটা last question paper 1 रो what is social mobility distinguish between intergenerational and intragenerational mobility लिखियो पिला माने social mobility is a mechanism by which an individual or a group of individual move from one social position to another social position तापर दीटा mobility भीतर डिफरेंस ए कहिछि intragenerational mobility कहले क्यारियर मोबिलिटी गोटे लोक आज क्लर्क हिसाब रे गोटे पिला क्लरिकल चाकरी पाइला 2 वर्ष चाकरी करछि तापरे हे गला ओएस पाइला ओएस पुनी ट्रेनिंग नउथला ओएस पाइ सारी की आईएस पाइ गला दिस इज इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी दिस इज आल्सो कॉल्ड कैरियर मोबिलिटी देन इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी जोटा कि मेनी जनरेशन विद इन मेनी जनरेशन आसे दैट इज इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी जनकर बापा थिले प्राइमरी स्कूल टीचर सी निजे पिलाटी हला गोटे आईएएस ऑफिसर एवं तार जतले पिला जन्म हला ता पिलाटा हे गला कैबिनेट रैंक मिनिस्टर दिस इज इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 18 क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन पेपर 1 ऑफ ओपीएससी 2022 एग्जाम मु सब क्वेश्चन गुडा को शॉर्टकट रे डिस्कशन करली अधिकांश क्वेश्चन रो येटा आंसर टा राइट अप टा मु देई देछि तक तमे देखि दबो आउ नेक्स्ट जो करी क्लास करी स्टडी आईक्यू तरफ रू से क्लास रे मो पेपर 2 गत वर्ष ओएस रे जहा क्वेश्चन पड़छि डिस्कशन करी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।